In this video, we will discuss about a scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors. We define as the scalar product of two vectors vector A and vector B with magnitude A and B is defined by a scalar AB cos theta, where theta is the angle between the two vectors. Generally, we write down as vector A dot vector B is equal to AB cos theta. So this is the dot product of two vectors. Dot. Okay, we denoted this by this dot. So when we do the dot product of two vectors, so A dot B gives us AB cos theta. So this may be positive, negative or zero. किसके बेस पे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा, विच में भी जो एंगल है हमारा थीटा वो एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है और राइट एंगल। respectively. So when we define the scalar product of two vectors, so that will be vector A dot vector B equal to AB cos theta. So theta is the angle between two vectors A and B. Now we move to the next, that is the condition of perpendicularity. So first we start the condition of perpendicularity. Condition of perpendicularity. So for perpendicular condition, that means two vectors we define as two vectors A and B are said to be perpendicular if vector A dot vector B is equal to 0. कब होगा ये 0? जब हमारा जो एंगल होगा थीटा विच इक्वल टू पाई बाई 2. तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 क्या होता है? 0. तो vector A dot vector B is equal to 0. So that means you can say that they makes a right angle. So they makes a right angle. Makes a right angle. Means 90 degree. They makes a right angle. So here is the origin, makes a right angle 90 degree. We can say that this is vector A or this is vector B. So makes us a right angle. So then they are said to be perpendicular to each other.
perpendicular to each other, and vector A dot vector B equal to 0. Now, when we move to the next point, that point means if the vectors, point number 2, if the vectors are in same direction, so both vectors are in same direction, it means that when both vectors are in same direction, so theta will be equal to 0. तो एंगल तो आएगा नहीं जब सेम डायरेक्शन में we are talking about this condition. So when both are in same direction, so it means theta is equal to 0. So theta equal to 0. So what is the value of cos 0? Cos 0 value is 1. So then the dot product of two vectors is equal to AB. Vector A dot vector B is equal to AB, which is purely constant. Now, next point, if their direction are opposite. अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है. So when the direction is opposite, so in such case, so theta क्या होगा उस केस में? Theta will be pi. So that means we can take here this side as, so one direction is this and second direction is this. So theta makes the angle pi. So theta pi, or what is the value of cos pi? The value of cos pi equal to -1. So then dot product क्या होगा आपका? Vector A dot vector B is equal to AB cos pi. So this can be written as vector A dot vector B is equal to minus AB. Now, we move to the next case. That is the case number 4. If A cap and B cap are unit vectors. Unit vector पता ही क्या होते हैं? Are unit vectors so that magnitude of unit vector A is equal to 1 and the magnitude of unit vector B is equal to 1. So then we have unit vector A dot unit vector B is equal to cos theta. Is equal to cos theta. Now, we move to the next definition. Next definition is angle between two vectors. Angle between two vectors in terms of scalar product. When we calculate the angle, so we can say that if theta is the angle, if theta is the angle between two non-zero vectors. Non-zero मतलब they are not equal to 0. Non-zero vectors, vector A and vector B. So we can write down as vector A dot vector B is equal to AB cos theta. So यहाँ से अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? Cos theta we can write down as vector A dot vector B upon AB, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? Cos theta equal to, so this can be written as vector A upon A dot vector B upon B, और vector A upon A क्या हो जाएगा हमारा? That is A cap, means unit vector. So you can write cos theta is equal to A cap और dot B cap. So theta कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो theta will be cos inverse A cap dot B cap. So we can calculate the angle theta by using this
formula. So that is theta is equal to cos inverse A cap dot B cap. Now, so for calculating the theta or we calculating the dot product, so we can take problems based on this. So we take one problem based on this. So question number 1, find a dot product of two vectors. Dot product of two vectors. So vector A is given as 2i minus j plus k, and the second vector B is equal to I minus 3j minus 5k. So for solving such type of problems, so first we discuss one case. केस क्या होगा? तो पहले हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर फील्ड डिस्कस करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो फर्स्ट वी डिस्कस ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड आई जे और के। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड आई जे के, और कैसे इसे डिफाइन करेंगे? So these three we take as a mutually perpendicular. These three we can take a mutually perpendicular. So suppose we have a x-axis here, we have y-axis, and we have z-axis. So corresponding to x, we take the vector I, for y vector j, and here we take as vector k. So when they are perpendicular to each other, so when we do the dot product of same vector, so जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं सेम वेक्टर का, तो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, और के डॉट के भी 1 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट विद सेम वेक्टर इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई को आप आई स्क्वेयर भी लिख सकते हो, आई स्क्वेयर दैट इज द जे स्क्वेयर, और दिस विल बी द के स्क्वेयर। और जब डॉट प्रोडक्ट हम डिफरेंट वेक्टर के साथ करेंगे, दैट मीन्स वेक्टर आई का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर जे के साथ करेंगे, दैट गिव्स अस 0, और जे डॉट के करेंगे ऑल्सो 0, और के डॉट आई करेंगे ऑल्सो गिव्स अस 0। Similarly, you can write down j dot I. J dot I is equal to 0. So equal to k dot j is equal to I dot k. So ध्यान रखना होगा आपको, when we are doing dot product of two vector, तो सेम वेक्टर दैट मीन सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे गिव्स अस 1, और अदर वेक्टर के साथ करेंगे गिव्स अस 0। नाउ अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 1, अब सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो हियर वी राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमें ध्यान रखना है while परफॉर्मिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे वो तो इन्हीं पे बेस्ड होंगे, क्योंकि वेक्टर आर जो हमें दे रखा होगा, बेसिकली हम जब वेक्टर आर को डिफाइन करेंगे तो वेक्टर आर हमारा किस फॉर्म में होगा? आई वेक्टर आई वाई जे और प्लस जेड की। तो सिमिलरली जो वेक्टर ए और बी डिफाइंड है इन सेम फॉर्म, दैट मीन्स नाउ when we do the dot product of AB, so vector A dot vector B, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2i माइनस जे वेक्टर जे और प्लस के, और डॉट वेक्टर आई माइनस 3j माइनस 5k। तो हियर आई डॉट आई, तो दैट मीन सेम वेक्टर के साथ जब डॉट कर रहे हैं तो आई डॉट आई 1 होगा, तो 2, और इधर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 into 1,
2 × 1, सो आई डॉट आई 1, और माइनस जे के साथ ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 × 3, तो दैट मीन्स 1 × 3, that is 3, और प्लस के here is प्लस साइन और माइनस साइन, तो विल बी माइनस साइन, तो 1 × 5 और k डॉट k इज 1, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 + 3 - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0 है, दैट मीन्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, so it means that they are perpendicular to each other, so vector a and vector b are perpendicular to each other, तो वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो नाउ we move to the next problem based on the dot product। So we take the question number 2, find the angle between two vectors। Here vector A is given as 2i plus j minus 3k, and vector B is equal to 3i minus 2j and minus k। So here we are going to obtain the एंगल थीटा। तो एंगल थीटा, अब थीटा एंगल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि वी नो दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर a अपॉन a इंटू वेक्टर b अपॉन b। तो इसको हमने क्या लिखा है, तो दिस कैन बी कॉस इनवर्स यूनिट वेक्टर a और यूनिट वेक्टर b। अब पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाउ, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ आई दैट मीन्स 2² प्लस जे 1² और माइनस माइनस हो जाएगा, -3² में प्लस हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 × 2 = 4 प्लस 1 और प्लस 9, तो 5 × 9 = 14, तो दिस इज √14। तो वेक्टर ए हमारा √14 आ गया। तो जब हम ए कैप लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ द ए, तो दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर ए अपॉन यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो वी कैन राइट डाउन 2i प्लस जे minus 3k upon √14। Now for magnitude of vector b, so vector b magnitude will be 3² minus that means plus minus 2² और प्लस माइनस 1², तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 + 4 और +4 और +1, तो दिस ऑल्सो 14, तो ये भी 14 हो गया। अब यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा, तो वेक्टर बी क्या है हमारा, तो वेक्टर बी है 3i - 2j - k, तो 3i - 2j - k अपॉन √14। तो नाउ अब हमें क्या करना है, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, तो जब डॉट प्रोडक्ट टू यूनिट वेक्टर का करेंगे, तो ये दिस विल बी 2i प्लस जे और -3k अपॉन √14 डॉट 3i - 2j - k अपॉन √14। तो ये कैसे क्या हो जाएगा, तो i डॉट i 1, वही डॉट प्रोडक्ट जब टू वेक्टर का साथ कर रहे हैं सेम वेक्टर 1 होगा,
तो 2 into 3 आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन, तो यहाँ 1 है कोफिशिएंट, इसका -2 है, तो +1 into -2, तो 1 into -2 ऑफ के डॉट के, तो के डॉट के तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ -3 है, और इनटू करेंगे तो -1 होगा, के डॉट के इज 1, और ये तो कितना हो जाएगा 14, √14 into √14, तो दिस कैन बी रिटन एज, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 6 - 2, तो 1 2, और माइनस माइनस हो जाएगा +3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना हो गया 6 3 9, तो ये हो जाएगा 7/14, तो 7/14 मीन्स 1/2, और जब थीटा लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। अब आपको बताइए कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा? theta equal to cos inverse 1/2, so you can write down the value of cos inverse 1/2, so we can obtain the angle also, so when we are obtaining the angle, so we can use this formula. Okay, so you can write down this theta equal to pi by 3.